भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय महामंत्री श्री माननीय विनोद तावडेजी, महानगराचे आमचे मुंबईचे अध्यक्ष मान्य आशिष शेलारजी, मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रसाद लोढाजी, या महाजनसंपर्क अभियानाचे प्रमुख प्रवीण दरेकरजी, केशव उपाध्यायजी आणि श्वेता शालिनीजी आणि सर्वच उपस्थित आमचे पदाधिकारी, खरं तर आपण सर्व साक्षी आहोत की 2014 आणि 2019 मध्ये माननीय मोदींच्या नेतृत्वामध्ये जो वचननामा माननीय मोदीजींनी देशाच्या सर्व जनतेला दिला आणि या वचननाम्यामध्ये समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीचं कल्याण, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प आणि हा जो मॅनिफेस्टो आणि वचननामा दिला, या वचननाम्यावर आपल्याला अभिमान वाटेल की माननीय मोदींच्या नेतृत्वामध्ये 2014 आणि 2019 मध्ये प्रचंड बहुमताचं सरकार, जे मधल्या अनेक वर्षापासून बहुमताचं सरकार नव्हतं, पण माननीय मोदीजीवर विश्वास ठेवून जनतेने जी मतं दिली, खरं तर आपल्या सर्वांना अभिमान वाटेल की माननीय मोदींच्या नेतृत्वात आपलं सरकार आलं, देशामध्ये जे सरकार आलं आणि या सरकारच्या काळामध्ये जो वचननामा माननीय मोदीजींनी दिला होता, जो वचननामा आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वात दिला होता, मोदीजींनी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर 9 वर्षात एकही दिवस सुट्टी न घेता या देशाच्या कल्याणाचं, गरीब कल्याणाचं ज्या पद्धतीनं त्यांनी अभियान केलं आणि आज बघा की 65 वर्षात जे बदल झाले नाही ते बदल 9 वर्षामध्ये ह्या देशाने बघितले, आपण सर्वांनी बघितले. आणि मग जेव्हा सरकार येतात, जनता आपल्याला मतदान करतं, तेव्हा मतदानातून जे सरकार आल्यानंतर त्या सरकारचा लेखाजोखा संपूर्ण जनतेसमोर मांडला गेला पाहिजे. ही आपली संस्कृती आहे. खरं तर निवडून आल्यानंतर प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी किंवा सरकारने आपण केलेलं काम हे जनतेसमोर मांडलं पाहिजे आणि आपण प्रत्येक वर्षी मांडतो. आणि यावर्षीसुद्धा माननीय मोदींच्या नेतृत्वातल्या सरकारचं काम महाराष्ट्रातल्या 3 कोटी जनतेपर्यंत पोहोचवण्याकरता आमच्या केंद्रीय नेत्या माननीय निर्मला सीतारामनजी मोदी सरकारचा लेखाजोखा मांडण्याकरता आणि या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आल्या आहेत. मी त्यांचं स्वागत करतो महाराष्ट्राकडून आणि त्यांना विश्वास देतो की भारतीय जनता पार्टीने जी रचना उभी केली आहे, आमचे प्रवीण दरेकरजी हे महाराष्ट्राचे प्रमुख आहे या अभियानाचे, आमची टीम आहे. माननीय आपल्या प्रवीण दरेकरच्या नेतृत्वामध्ये या राज्याच्या 1 लाख बूथवर, या राज्यातल्या 1 लाख बूथवर 1 लाख बूथ प्रमुख, आमचे सर्व शक्ती केंद्र प्रमुख, आमचे मंडळाचे पदाधिकारी, आमचे जिल्ह्याचे पदाधिकारी, आमचे सर्व आमदार खासदार, माननीय स्वतः देवेंद्रजी आणि केंद्रातले आमचे जे काही 50-55 प्रतिनिधी आले आहेत, आम्ही या ठिकाणी विश्वास देतो माननीय निर्मलाजींना कि निर्मला जी हम 3 करोड़ जनता के पास जाएंगे और मोदी जी ने 9 साल में किया हुआ पूरा काम, हम सरकार का जो काम है वो 3 करोड़ जनता तक पहुंचाएंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं, आपल्याला विश्वास देतो की 2024 मध्ये पुन्हा हा महाराष्ट्र मोदीजींच्या मागे उभा राहील आणि पुन्हा 45+ लोकसभेच्या सीट या महाराष्ट्रामध्ये मोदीजींचा विश्वास ठेवून, मोदीजीवर विश्वास ठेवून जनता आम्हाला देईल, हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. आपण या महाराष्ट्रात आले, पुन्हा एकदा या महाराष्ट्राच्या जनतेमार्फत आपले आभार मानतो आणि माझा प्रास्ताविक संपवतो. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद बावनकुळे साहेब. या अभियानाची व्यापकता काय असेल हे आपण या ठिकाणी सांगितलं. देशामध्ये अभियान जोरात सुरू आहे, राज्यातही मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे आणि या राज्यालाही सेवा, प्रशासन आणि चांगली
या ठिकाणी विकासाची गती देणाऱ्या अशा राज्याचं आपलं नेतृत्व, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं. सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब. केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी, माननीय विनोद तावडे जी, चंद्रशेखर बावनकुळे जी, आशिष शेलार जी, मंगलप्रभात लोढा जी, प्रवीण दरेकर जी, सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित सर्व मीडियातील बंधू आणि भगिनींनो, माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वातील सरकारला 9 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि एक महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं आयोजित केलं आहे. या 9 वर्षाच्या काळाचं सिंहावलोकन करण्याकरता माननीय केंद्रीय मंत्री निर्मलाजी सीतारामन या आपल्यामध्ये आलेले आहेत आणि संपूर्ण या 9 वर्षातल्या उपलब्धी आपल्यासमोर त्या निश्चितपणे मांडतील. खरं तर 2004 ते 2014 या कालावधीमध्ये आपण एक UPAचं सरकार बघितलं की निर्णय न घेणं हा ज्या सरकारचा सगळ्यात मोठा निर्णय होता. निर्णय लकवा अशा प्रकारची त्या सरकारची नीती होती आणि अशा प्रकारे त्या सरकारचा उल्लेख देखील केला जायचा. प्रचंड भ्रष्टाचाराने ग्रसित जेवढे मला असं वाटतं इनफेमस ऐतिहासिक स्कॅम्स हे UPAच्या सरकारमध्ये झाले तेवढे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधी झाले नव्हते. अशा प्रकारची अवस्था आपण बघितली आणि मग त्या पार्श्वभूमीवर माननीय मोदीजींचं सरकार आल्यानंतर मागील 9 वर्षामध्ये अतिशय गतिमान निर्णय प्रक्रिया आपण बघितली, प्रचंड विकास आपण बघितला. कुठल्याही प्रकारे एकही डाग सरकारवर कोणी लावू शकलं नाही, कोणी बोटं उचलू शकले नाहीत. भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था या देशातला सगळ्यात मोठा प्रश्न देशाची डिलिव्हरी सिस्टीम होती, ती पूर्णपणे करप्शन फ्री करण्याचं काम हे मोठ्या प्रमाणात माननीय मोदीजींनी केलं आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गरीब कल्याणाचा अजेंडा चालवत असताना गरिबांपर्यंत त्यांचे अधिकार पहिल्यांदा या देशामध्ये पोहोचवण्याचं काम हे माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात झालेलं आपण बघितलं. खरं म्हणजे एकूणच या देशामध्ये विविध योजना ज्या काही मोदीजींच्या नेतृत्वात सुरू झाल्या त्याच्या बेनिफिशरीजचा जर आपण विचार केला तर महाराष्ट्रातली त्याची संख्या जर आपण बघितली, मी देशातलं बोलत नाही पण महाराष्ट्राचा जरी आपण विचार केला तरी महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये जवळपास 17,79,00,000 डोजेस हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला मोफत देण्याचं काम हे माननीय मोदीजींच्या सरकारने केलं. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आणि ग्रामीण मिळून 25 लाखपेक्षा जास्त घरं ही बांधून तयार झाली आणि आता अनेक घरांचं काम हे या ठिकाणी चाललेलं आहे. जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत 1,11,00,000 घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा नळ स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर पोचला आणि अजूनही याचं काम चाललेलं आहे. PM उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत जवळपास
38,90,000 या ठिकाणी बेनिफिशरीजला त्या अंतर्गत फायदा झाला आणि आयुष्यमान भारत योजनेच्या अंतर्गत 71 लाख गरीब लोकांना 5 लाखापर्यंतचा मोफत उपचार हा त्या ठिकाणी देणं सुरू झालं. त्याचबरोबर PM किसान सन्मान योजना, ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना थेट 6,000 रुपये त्यांच्या खात्यात दिले जातात आणि आपल्याला कल्पना आहे की आता महाराष्ट्राच्या सरकारने देखील यात 6,000 रुपये देण्याचं ठरवलं आहे. 12,000 रुपये आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. याच्यामध्ये 1,10,00,000 शेतकऱ्यांना 1,10,14,738 शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे कौशल विकास योजना, ज्याच्यातनं आपण स्किल इम्पार्ट केले, या योजनेच्या अंतर्गत 10,27,000 युवांना त्याचा फायदा मिळाला. PM फसल बीमा योजना 87 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला. त्याचप्रमाणे जो आमचा रस्त्यावर काम करणारा पानपट्रीवाला, ठेलेवाला, अशा प्रकारचं काम करणारा जो स्ट्रीट वेंडर आहे, अशाही जवळपास 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्सला PM स्वनिधीमधनं त्या ठिकाणी मदत मिळाली आणि आता सेकंड राऊंड देखील त्याचा चाललेला आहे. मुद्रा योजनेतनं 41,50,000 41,58,000 उद्योजकांना मुद्रा योजनेचा लाभ झाला आणि ते आपल्या पायावर उभे राहिले. मला असं वाटतं की हा एक आकडा सांगतो, जे लोक रोजगार स्वयंरोजगाराच्या बद्दल बोलतात, एकट्या महाराष्ट्रामध्ये 41 लाख लोकांना मुद्रा योजनेचा फायदा या ठिकाणी झाला आहे. अटल पेन्शन योजना जवळपास 40 लाख लोकांना याचा फायदा झाला आहे. सुकन्या समृद्धी योजना 23 लाख मुलींच्या जन्मानंतर त्याचा त्या कुटुंबांना फायदा झाला आहे. PM मातृवंदना योजनेमध्ये 32 लाख मातांना याचा फायदा झाला आहे. यादी खूप मोठी आहे. आपल्याला माहिती आहे की मोठ्या प्रमाणात जवळजवळ महाराष्ट्रातल्या 4 कोटी कुटुंबांना मोफत अन्न हे गेली 2 वर्ष माननीय मोदीजींनी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिला आहे. आणि म्हणून एकूणच गरीब कल्याणाचा अजेंडा राबवत असताना महाराष्ट्रामध्ये आज केंद्र सरकारच्या मदतीनं चालू असलेली इन्फ्रास्ट्रक्चरची जी कामं आहेत, या कामांचे जर आपण एकूण टोटल बघितली, 4 लाख कोटीपेक्षा जास्त किमतीची इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं ही एकट्या महाराष्ट्रामध्ये केंद्र सरकारच्या मदतीने चालली आहे. आणि आपण जर याचा हिशोब लावला तर कदाचित 20 वर्षात जी आधी कामं होऊ शकली नाही, ती गेल्या 9 वर्षामध्ये आपण या महाराष्ट्रामध्ये केलेली आहेत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून. आणि म्हणून मला असं वाटतं की एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे सामान्य माणसाचं कल्याण करणारा अशा प्रकारचं हे सरकार या ठिकाणी राहिलं आहे. खरं तर सांगण्यासारख्या गोष्टी खूप आहेत, पण निर्मलाजी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि निर्मलाजींमध्ये आणि आपल्यामध्ये अधिक वेळ घेण्याची माझी इच्छा नाही. पण माननीय मोदीजींचे मी आभार देखील मानतो आणि मोदी सरकारचं अभिनंदन देखील करतो की खऱ्या अर्थानं नवा भारत घडताना आम्ही पाहतो आहे. 2014 पूर्वीचा भारत आणि 2023चा भारत याच्यातला जो काही एक प्रचंड मोठा फरक आहे, तो महाराष्ट्रामध्ये देखील आपण अनुभवतोय, देशामध्ये आपण अनुभवतोय. आणि मला विश्वास आहे की मोदीजींच्या नेतृत्वात जो भारताने एक विकसित भारताचा संकल्प केला आहे, तो निश्चितपणे पूर्ण होईल. आणि या त्यांच्या संकल्पामध्ये निश्चितपणे माननीय मोदीजींसोबत महाराष्ट्र हा पूर्ण ताकदीनं उभा राहील, अशा प्रकारचा विश्वास देखील मी व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो, आपले आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद फडणवीस साहेब. केंद्राच्या माध्यमातून
महाराष्ट्राला मिळालेला निधी आणि समाजातील विविध घटकांना कशा पद्धतीनं लाभ झाला आहे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्धतीनं डेव्हलप झालं याविषयी गोषवारा 9 वर्षाचा आपण या ठिकाणी महाराष्ट्रासाठीचा मांडलात। अभी इस देश के वित्त मंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में देश में काम कर रही है ऐसी हमारी नेता और देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर करके एक अलग ऐसी छवि प्रतिमा इस देश में सरकार में खुद की बनी है, ऐसा हमारे सबके आदरणीय निर्मला जी यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद में पत्रकारों से संवाद होगा। मैं विनंती करता हूँ हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारामन मैडम। उजला उजला सा चमन चारों दिशा फैला अमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। 9 साल मुझे हर बार तेरे आगे झुकने का मन हुआ, जब झुका मैं तेरे आगे तेरा होने का मुझे गर्व हुआ। दुनिया को राह दिखाता तू ही तो मेरा प्यारा है, इसीलिए तेरे आगे बार बार दिल हारा है। मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। मैं झुका तिरंगे के आगे, मैं झुका माँ के चरणों में, मैं झुका नेताजी के आगे, मैं झुका पिता के कदमों में। समझ लीजिए ये कागज ही है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बड़ी है। भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे, मोदी जी हमें बचा लेंगे। अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। मेरा देश ही ऐसा इकलौता जिसने दुनिया को दंग किया, मेरा देश है दुनिया का हीरा जो दुनिया के है संग खड़ा। 250 साल तक जो हम पर राज करके गए उनको पीछे छोड़ करके दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल। देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। छोटे बड़ों का भेद नहीं, 9 साल का भारत है, अमृत काल के द्वार खड़ी देश की नई इमारत है। मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन, मेरे देश तुझे नमन। सबको नमस्कार। As was explained before, all over the country, marking the 9-year completion of Prime Minister Modi and the team, there are press conferences, interaction with media, and also discussion on what actually has happened in the 9 years. So as a part of that, I'm here today in the financial capital of India, having an opportunity in the presence of top leadership of Maharashtra of BJP to interact with you, the media personnel. Thank you very much for coming here. What I would broadly indicate to you before I start on this slide presentation is, it consists totally of about 55 different slides. I don't want to spend time on each one of them because we are also giving you a handout of several data inclusive of this presentation. So you will certainly get to seeing each one of them.
But for you, I'll give a broad classification of what we've put together. So 9 years under certain heads, 9 years under certain other heads. Like that, you will be able to follow it as I go through rapidly, so that my opening statement and also the slide presentation doesn't take more than 10-15 minutes. Then you're welcome to ask questions. I said there are 55 sites. So the first 20 slides, broadly, it can be 20, 21, whatever. First 20 slides look at how the poor, the Dalit, the backward, the SC, ST are all being attended to with provision of basic needs. So I start with about the first 20 slides, Dalit, Pichda, Vanchit, Soshit, Pidit, उनके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या पिछले 9 साल में अचीव हुआ, उसका विवरण आएगा डेटा सहित. Next, about 21 to 34 slide numbers, you have details on infrastructure. There are 1 or 2 infrastructure related slides which come later also, but largely between slide 24 to slide 34, it's details about how much has been achieved in terms of infrastructure. When I speak of infrastructure, it's multimodal. It's not just roads, it's not just flyovers, it's harbors, ports, inland waterways and everything else. Then from slide 35 to slide 37, it's about financial inclusion. How the poorest of the poor, how middle class, how small vendors, how people who have never had a bank account earlier have all been brought into the fold of formal financial systems. It can be through NBFC, it can be through banks, it can be nationalized banks, or it can be a rural credit cooperative, whatever be it. Next, from slide 38 to slide 42, roughly, you're talking about digital India, you're talking about startups, you're talking about skills, then also ease of doing business. So how many laws have been thrown away as being archaic, and how many compliances have been reduced so that chota businesses don't have to do so much file work. So those details, exactly all that done in the 9 years only. Then you go to 43, slide number 43 to slide number 46. You're talking about the cultural and inheritance, legacy, civilizational, and those aspects, what have been achieved in the 9 years. 47, slide number 47 is a single slide, but very important to understand what we have achieved in the renewable energy area. It's a major mile forward. In fact, it is a major achievement, if I may use that word. No country within the 9 years, comparable 9 years everywhere, has achieved as much as we have achieved in these 9 years in renewable energy. So you have the data given there. There is one slide on national security, but the following slides also will tell you what importance is given to national security, and as a result, what fallout we've had in other aspects related to national security. For instance, how, because Prime Minister Modi has put terrorism as one of those which have to be roundly and squarely addressed, we've not had major incidents, border skirmishes is apart, but you still, in the mainland of the country, we've kept terrorism free by putting India first. And by putting India first, you also responded to by other countries, which has helped us to get our people, if they were held or stuck up because of COVID, no transport was moving, no communication was happening, but how did we bring all our students or young people or citizens who were caught up in different parts of the world because COVID came and lockdown came in all in a sudden. So we managed to get them back. We managed to get people who were stuck up because of strife, local civil war or whatever, or because
in countries, our students went to study and there was a war, we had to bring them back. So, although slide number 48 is one slide which relates to national security, there are some slides which tell you about how many people have been brought back safely to our country back again. Then there are 49 and slide 50 will talk about how defense, in the area of defense, we've achieved Atmanirbharta. We are procuring less from outside, we are manufacturing more ourselves, and we are exporting a lot more ourselves. So that relates to it. And finally, 48 I said is a national security slide, and then I stretched it to say how our students are being brought back, citizens are being brought back. Slides 51 to 54 give you all the details about the number of people who have been brought back safely like that. And the last slide, which is the 55th, shows clearly how, because of the tireless effort of the Prime Minister, he has gained the trust of the people. In fact, that trust of our people in our Prime Minister has actually elevated the status of India globally, and today India's voice is heard very powerfully. So now I go through the slide, but you will see most of what I've said broadly will be covered. So this is a very important quote which I'd like to highlight to you. For the first time in the country, the poor have got security as well as dignity. Those who were made to realize for decades that they are a burden on the development of the country, today they are speeding up development of the country. Every paisa of what is earned through tax money is being spent properly for serving the poor. The vaccine is a classic example. You have covered a lot, you've written a lot on it. Vaccination cover, 220 doses, all free for our people and achieved in record time. And even today, many of the parts of the world are surprised how we have achieved that. Yesterday, in fact, many of you all who watched the program in the new parliament must have seen how Prime Minister made a very interesting comparison. He said, look, for our people's representatives who are all here and who are going to legislate here and make laws here for the country, this new building is going to serve them. But we've never forgotten that every poor Indian wants a pakka house for himself. And that's what in the last 9 years has been achieved. 3.5 crore pakka houses have been constructed. Now, houses without toilets, from the time Prime Minister spoke about it on the Red Fort, and making sure that after that, that issue of women's security, safety and dignity is protected, toilets were being constructed and 11.72 crores of toilets have been already built for the sake of our people, of which 100% coverage has been achieved in rural India. Whereas it was only 13% earlier in 2013-14. Now, access to water in houses, again, 12 crore households have been covered with access to pure and good drinking water. You all know the story of Ujjwala. 9.6 crore families have been given free connection, and then the cylinders are being used. There are always this discussion about now when the prices have gone up, what happens? 200 rupees per cylinder, unlimited number of cylinders, we are subsidizing even today. So the prices have gone up, not because we want to increase the price, it's a global fact, and we are importing it. But we have made sure that 200 rupees goes to the account the moment the order for another cylinder is booked. Then this fact about which Deputy Chief Minister Fadanvis referred, 80 crore people for 2 full years have been given totally free grains and some quantity of pulses, so that some protein is also supplied to them. And that even today, when we go for international meets in the World Bank or IMF,
has been acclaimed as one of the biggest food security programs in the world, achieved without fail, and it reached the people even during the lockdown. Again, a fact which Fadanvis ji referred to is cover up to 5 lakh crores for medical facilities for all the poor people. This is a very sensitive topic which even our Honorable Prime Minister spoke from the Dread Fort. So are we making sure that the poor girls are given sanitary equipments and sanitary pads? So that today is being given through Jan Aushadhi Kendras, 1 rupee per pad available in Jan Aushadhi Kendras. There's no doubt that it has made a big change to the poor people. Already spoke about. For lifestyle related diseases, where people were spending more than about 4,000, 5,000 rupees per month on getting medicines for that. Today, that very set of medicines is available between 800 and 1,000 rupees for the same set of medicines, provided they were generically bought. I mean, they are generic drugs rather than branded. It's brought down medical expenses, out-of-pocket expenses drastically down for people. This is a story which we've said in the parliament several times. During the pandemic and immediately after that, international fertilizer prices shot up the roof. 95% of all the fertilizers that Indian farmers use are imported. There are 3 or 4 different categories they bring in, and all these are largely imported. And 1 or 2 of them became so expensive. But Prime Minister Modi was very clear that we can't let the farmers not have adequate fertilizers, but at the same time, we can't shift the burden of the price to them. So the entire cost of increase was borne by the central government, and the farmer was paying the same price that he paid before the pandemic, during the pandemic, and even after the pandemic, and no increase has been shifted to the farmer. Loans to buy seeds and 6,000 rupees per farmer, Kisan Samman Nidhi. I move also to talk about the social justice. 10% EWS quota has really helped a lot of poor families. There are very many anecdotal stories about how children coming from such families have today found admission in courses which they would have otherwise not dreamed about. Backward Classes Commission is a milestone achievement, and it is disappointing to say that today the leading opposition, which constantly questions about, what are you doing for poor? This is, you have a Central Vista program costing so much, but are you doing for the poor? Where the very same people who oppose the formation of Backward Class Commission. I wish and honestly request the media humbly that such questions should be asked of the opposition when they talk as though, oh, this expenditure on the parliament is not required, it should have been spent on poor people. You didn't even support the Backward Classes Commission for a very long time. They stood against it. This is a step which I duly thank the Honorable Prime Minister for having brought this category. Till then, people were just saying handicapped, physically handicapped, mentally handicapped, whatever. He gave them a dignity by saying they have a quality which is not found in ordinary people, and called them Divyang. And then 7 to 21 categories have now been, where it was just 7 categories, 21 other categories have also been brought in. 77 categories have gone up to 21, and that is respect which is being given to Divyang. By increasing the categories, the facilities and the government support also increases. Now this is something which I will very quickly pass through. In the last 9 years, 74 new airports have been added, whereas till 2014, India had only 74. So 74 plus 74 is what we have now. Similarly, road construction till 2014, 91,000 odd kilometers. Now, additionally 53,000 odd kilometers.
9 years, there was no attempt to build any waterways in India, although it is cost effective. You have 111 being done in India, inland waterways. Vande Bharat Express, not with that name, any other name, no improved version of a railway coach system was introduced earlier. We brought in Vande Bharat in the last 9 years, 20 of them. Similarly, metros have come in a big way to reduce the cost of the middle class, which move in urban areas from their residence to work place of work and movement, and therefore public transport, bringing cost of fuel, bringing down total payment that we go up for importing fuel can considerably come down once metros gets used. Now 15 cities in India have metros. This is a very important slide, I would think. Higher education has received so much importance. 15 new AIIMS have been built, whereas we had only 7 till 2014. 700 new medical colleges have been built, whereas we had 641 all put together till 2014. And this has resulted in 69,663 new medical seats, whereas till now, till 2014, in all put together, you had only 82,000 seats. Similar story for IITs. 16 till 2014, we've added 7 in the last 9 years. Added 7 IIMs in the last 9 years. 390 new universities in the last 9 years. So you have numbers speaking for how much for skilling and how much for higher education the government has invested, and the cost is borne by the central government because manpower comes from them, land comes from the state, and the resources are all pooled for higher education. Now this is a very important slide, considering that I've told you huge amount of fertilizers, the traditional types, are being imported even now, whereas India has done a massive progress in identifying liquid nano urea, which will be useful for us, and as a result the manufacturing plant has also been set up. And one thing I like to add here, liquid nano urea is so important from so many different aspects. Unlike the traditional fertilizer, which is thrown on the ground, sprayed like that and falls on the ground, and then you water the plant, the fertilizer and its traits go to the soil. Whereas a nano liquid fertilizer is sprayed on the leaves. So it goes to the leaves directly and not to the soil. Effectiveness of a fertilizer reaches directly to the plant rather than from the soil through the root, through the stem, and then to the branches. This actually goes to the leaf directly, and the photosynthesis happens so quickly, and therefore the plant gets the full benefit of the urea. Whereas when you do it to the land, it does take time. Residual fertilizer remains in the soil, and the soil, therefore, when it gets the rain, has the water with the fertilizer leftovers, which is what the plant will drink and which is what will also come in the groundwater. So this is a lot more eco-friendly and healthy. So India now produces its own nano liquid fertilizer. Then the various projects which I said, inland waterways and also for agriculture, Sarayu, Bogibeel, Kosi, and Kollam bypass. Interesting story about Kollam bypass I would like to add here. There are several projects in India like the Kollam, which has been waiting for decades. Now Kollam takes the cake actually because it has waited for 5 decades. Like any other government, Modi government also could have just said, oh, it's been waiting for 5 decades, what's my problem? But Prime Minister Modi has gone into the details of why is it being held up, why is it being held up till now, what are the problems, address it, get it all sorted out and complete it. 5 decades of pending and it's now got achieved. Railway station story, you know, railway stations means poor people largely use it, airports are used by people who can afford it, but why should railway stations suffer by being not really kept up to the standards which common people also should enjoy? So many of the railway stations have been improved. Some marquee projects like highest railway bridge is the Chenab bridge.
engineering marvel, and the cost all put together stands out as a signature project for India. Also, pride of place given for the unifier of India. Sardar Vallabhbhai Patel gets his tallest statue, and that's become a big tourist site. It's also a symbol of Ek Bharat, Shreshth Bharat. World's longest highway tunnel has been built, and that's been rightly named Atal Tunnel, which is in the Lahore Spiti area of Himachal Pradesh. Grand infrastructure plan. This is one thing on which I'd like to say a word. Gati Shakti actually is such a fantastic portal, efficient portal, through which for constructing any project, you need so many different permissions, so many different authorities, so many different states. All of them will have to play a project role, and therefore every project has a tendency to get delayed or get stuck in one place. When you go through PM Gati Shakti, 1,600 layers are laid over one another, and you eventually see through all the layers as to where exactly this project is coming, and how many authorities have still not given you the clearance. And by building it there, do you really get cost efficiencies, or are you building something which has exactly the same thing within a kilometer, and therefore it's only going to be a burden on the exchequer? Is it going to bring you economic multiplier? So efficiency, cost efficiency, and also possibility of at one go getting a picture of how many authorities will have to clear it are all obtained by PM Gati Shakti. Today, whether it's the islands of Andaman and Nicobar or Lakshadweep or border roads, all of them go through these filters which are provided by Gati Shakti, and that is one of the reasons we are able to speedily complete projects. Digital India revolution is a big story. On its own, it can be one full session. I'll just tell you, through DBT, we have saved, India government has saved quite a lot of money because of the efficiency in identifying where the pilferage is happening, who are the bogus claimant, and so on. So DBT has actually brought in efficiency and also stopping pilferages. Aadhaar Mobile Trinity has actually made today Indians receive money into their account directly, whereas during the COVID, you came to know how in the United States, for instance, they were writing checks and posting it, none of which reached the beneficiary because most of them left the houses, they couldn't pay the rent, they went into their parents' apartments, and therefore these benefits which were sent to them could not even reach. Whereas India, every beneficiary's account received that money at the press of the button. Atmanirbhar Bharat in 5G, leading mobile manufacturer, and so on. This is one story which again can be spoken at length. Beating United Kingdom and reaching the level of 5th largest economy. We were at the 11th position, and at the 5th position was UK. Today we've moved upwards and UK has fallen down. So it's a very big achievement for an emerging market economy. That story by itself is worth talking about, and we are still the fastest growing economy this year and for next year as well. Global rankings, about which of course all of you all know, I don't want to elaborate, you will get it in your hand. Ease of doing business, manufacturing rank of mobiles, and so on. Unicorns and startups, emerging youth power. You've seen the headings there. I told you that there are 2 slides on which we are talking about the culture and civilizational developments. You had a circuit, which is Buddha circuit, which is very popular among foreign tourists. Mahankal corridor, like the Kashi corridor, Ujjain corridor is now the big thing, so that the pilgrims or tourists are able to see the true and complete picture of the place. Somnath temple and the Kedarnath Dham, Char Dham as to how it has been improved, and Kartarpur Sahib,
which is a very important thing for the Sikh pilgrims, has also been developed acutely. And now if you look at it further, Ram Mandir has been achieved after a long court tussle. The Mandir is getting ready. By hopefully end of this year or early January 2024, it should be open for the public. Connectivity across Northeast. Every state has an airport. Every state capital has now got the infrastructure facility which they didn't have. One or two states which did not have railway connectivity in the Northeast, in their headquarters, have all got it now. Natural wildlife, Project Cheetah, Namami Gange. Lifestyle for environment has become big because it's dependent on a nudge to change the way in which we live so that climate action can be further strengthened. National security, I told you, has just one, talking about the surgical strike and airstrike, and also Article 370 being abolished. More importantly, I told you about the national security aspects on Atmanirbharta. Defense production has surpassed 1 lakh crores. Cutting edge equipments are also now being given to the armed forces, and border roads infrastructure is something which is remarkable achievement. And here it will not be out of place if I say how one earlier defense minister had told us, and he said it publicly, that if you build roads in the border, only the enemy will use it and he'll probably get into the country sooner, so we've not built border roads. Contrast that with what is happening in the border roads now. At the highest altitude and the farthest place which connects the forests of Myanmar, roads have been laid, telephone connectivity has been given, mobile towers are provided, some of them are equipped now up to now till 4G, but sooner they will also get 5G. I told you about the Indians who have all been brought back, 20,000 brought back safely from Syria, Libya, Yemen, Sudan, Nepal and Afghanistan. 2.97 crore Indians were brought back during the COVID pandemic. Flights had stopped, Indians couldn't come back, they have been brought back safely. G20 is happening and we've taken Vasudhaiva Kutumbakam as our slogan, which translates for the global convenience, one earth, one family, one future. India's stature abroad has grown manifold. We are today sitting at the high table determining many things which are globally being discussed and decided upon. You have the role that India's Prime Minister plays, which has brought many global leaders together to confer that kind of a stature to India. You've heard the comments which have come by different leaders. So the nation today expresses its gratitude for forming a government with a full majority, and trust is the foundation of this development. People are being trusted by the government, and that's why very many laws are being decriminalized so that businesses don't suffer severe punishment for small omissions and commissions. That is because we trust people. Similarly, tax has become faceless in its assessment because we trust people. And people in turn trust Prime Minister Modi because he wouldn't put nation first above himself or the party, and therefore that's the kind of leadership people have voted for, and he's been serving the last 9 years. Thank you. यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री या नववर्षाच्या संदर्भात जे काही आपले प्रश्न असतील त्या वार्तालाप अर्थमंत्री निर्मला मॅडम त्या ठिकाणी करणार आहेत. मी मान्यवरांना विनंती करतो की व्यासपीठावर बसून घ्यावं. सन्माननीय मान्यवरांनी व्यासपीठावर बसावं अशी मी विनंती करतो. कॉर्डलेस माईक 2-3 द्या पत्रकारांमध्ये.
प्रश्नोत्तराचं स्वरूप किंवा वार्तालाप जो करायचा आहे तो पर्टिक्युलर 9 वर्षाच्या मोदी साहेबांच्या कारकिर्दीवर या ठिकाणी वार्तालाप होणार आहे. त्याच्यामुळे फोकस आपल्या सगळ्या विषयांचा हा 9 वर्षाची मोदी साहेबांची यशस्वी कारकीर्द त्या अनुषंगाने आपण या ठिकाणी वार्तालाप करणार आहोत. मी पत्रकार बांधवांना भगिनींना विनंती करतो, साहेब सुरू करायचं. आपण वार्तालापाला सुरुवात करूया. प्रश्नोत्तर जी काय असतील ती पत्रकार बांधवांनी भगिनींनी विचारा. कॉर्डलेस द्या पब्लिक. हॅलो, रेडिओसल समीरकडे माईक आहे, आपण विचारू शकता. फक्त विनंती आहे की 9 वर्षाबद्दल विचारावे. समीर. मेरा सवाल ये है कि बीते 9 वर्षों में आपका अपना एक्सपीरियंस एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी के भी अपने पोर्टफोलियो में काम किया है, क्या रहा है और कौन सी चुनौती आपने पिछले बीते 9 वर्षों में देखी और आगे भी आपको लगती है? हम तो 9 साल के जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम उपलब्धियां वगैरह उसके ऊपर बात कर रहे हैं, मगर क्योंकि आपने इस प्रश्न पूछा, 9 साल उसमें 3 साल एकदम कोविड की वजह से, सेकेंड वेव के वजह से और रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से अनसर्टनिटीज बहुत बढ़ा. और स्ट्रिक्टली टू बी फेयर 9 साल में ये 3 साल गिनना भी नहीं है. उतना चैलेंजेस सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे दुनिया में हुआ. इसीलिए जो भी जितने भी हम इधर आपको दिखा रहे हैं, ये मानना चाहिए कि 6 साल में ही हुआ, 9 साल में नहीं. क्योंकि 3 साल तो इतने सारे लॉकडाउन और सेकेंड वेव के वजह से काम करने का टाइम और इकोसिस्टम ही नहीं था. सो मेरा अनुभव ये है कि अगर लीडरशिप में पॉलिटिकल विल है और कमिटमेंट है कि लास्ट पॉइंट तक स्कीम्स चलना चाहिए, और जो वायदा हमने मैनिफेस्टो के द्वारा दिए 2014 में और 19 में, उसका पूरे करने का पूरे करने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है. उसको रेस्पेक्ट करते हुए एक लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उस टीम में काम करने का अनुभव, मुझे लगता है कि एक काम करने का शैली, पद्धति और तरीका नेशन को डेडिकेट करने वाले हैं. इसीलिए वही मेरा मन में रहता है कभी भी. अरुणिल. Ma'am, the discontinuation of rupees 2000 notes, how it has fared till now? The opposition basically has been saying that it was a complete failure, that introduction of 2000 denomination of notes was not at all needed. How do you look at it as a finance minister? Leave me looking at it as a finance minister. It's the Reserve Bank of India in its clean note policy has come up with this thing, saying we brought it in at the time of the demonetization because quickly there should be some remonetization happening. That's been explained by the RBI's press note itself. So now having that objective achieved with already so many currency notes of 2000 category having already come into the system, but some which are remaining outside. And even by the lifespan calculation, the currency notes lifespan having been achieved, it's the Reserve Bank which is taking it back. So it's well within their business to do it. Ritvik. Ma'am, coincidentally, former finance minister P. Chidambaram is also addressing a press conference in Mumbai today, and what he's been saying about it is that the decision of introducing 2000 notes itself is a foolish decision, is what he said. So how do you react to it? And another point he has made is that British and American currency are there for over 100 years and the shelf life is for 5 years. So why was it taken back? Strictly, he knows very well that these are decisions being taken by the RBI on the 2000 note. So I should presume that these are questions asked of the RBI. They will be able to answer. So first thing first, currency is a sovereign business.
and decision on the currency is taken by the central bank, and when it is a question of which is continuing to be legal tender, the government's permission is sought. So these are processes and due diligences which both RBI and the government will follow duly. To cast aspersions on matters of this nature, currency, decision of a central bank, and to throw comparisons with other countries doesn't augur well for a finance minister who's seen it being in the ministry, and to very quickly judge something as being not good, it is foolish, it is wise. A government which lasted for 10 years, in which for a large part he was the finance minister. There are several questions which we have raised in the parliament. We've not had a substantial answer coming from them. So I would think it is better for all of us to understand the situation and provide observations which behold people holding such office, which are, how can I put it, which are commensurate with the office that he held, and not be frivolous about commenting and judging things. In your presentation, you have mentioned many achievements of Modi government, but you as a finance minister, what you think are the two best things that you could was able to deliver or dedicate to the nation, particularly when other countries are facing or railing many global challenges? Well, I wouldn't want to personalize it as to it is my ministry, I'm the minister, I have achieved it. Government as a whole, under Prime Minister Modi's leadership, has worked keeping people's interest in mind. So I do not want to pick out one from a ministry as though other ministries have not done equally for the people of India. So all of us have worked together, and particularly during the COVID period, the title under which we are meeting here now very importantly speaks of seva. It talks of sushasan and garib kalyan. I'm so glad these three are the points on which each one of us ministers under the leadership of Prime Minister have constantly kept in our mind and designed programs, and more importantly executed each one of them. मैम एक सवाल एक सवाल सचिन हर चुनाव में चैलेंजेस होता है, और हर बार हर चुनाव को उस एरिया के जनता का हित को मन में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके इलेक्शन का तरीका बनाते हैं या उसमें रणनीति तय करते हैं. इसीलिए हम कर्नाटका को रिपीट करेंगे. जनता सुनने के बाद वो उनके मन में जिनको सपोर्ट करना है उनको सपोर्ट करते हैं. ये नहीं है कि एक एक्सपेरिमेंट दूसरे राज्य में भी चलता है. ये सब बोल सकते हैं. कांग्रेस जितने भी बोलते हैं उतना उनके अंदरूनी मामलों को एड्रेस नहीं करते हैं, दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. उनके पार्टी के विषय के ऊपर वो ध्यान देना चाहिए. राहुल सवाल ये है कि आप जिस दौर में मुंबई आई हैं, जिस वक्त में आई हैं, उससे पहले विपक्ष के कई सारे लीडर्स हैं वो लगातार मुंबई का दौरा कर रहे हैं. तेजस्वी यादव ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, नीतीश कुमार आए, अलग अलग मीटिंग हो रही है उद्धव ठाकरे, शरद पवार से. और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दो तरह की बातें हो रही हैं. जो उनका कहना ये है कि 2024 के लिए वो एक विपक्ष को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. तमाम नॉन बीजेपी जो पार्टीज हैं उन सबको एक साथ एक मंच पर लाकर आपको हराने का दावा है. और दूसरा आपके ऊपर आरोप है यह है कि आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को हाईजैक कर लिया है. ये दो लगातार ये चीजें कॉमन है. मैं जानना चाहूंगा आपका इसके ऊपर क्या मानना है. नहीं, ऑपोजिशन उनके अपने एफर्ट्स को
कैसे हैंडल करना, एक यूनिटी में आना, ये उनका काम है भाई। बीजेपी का काम नहीं है ऑपोजिशन को यूनाइट करके खड़े रख के उनको हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। कोई भी पार्टी सत्ता में जो रहते हैं वो जनता के काम के ऊपर ध्यान रख के काम करते जाएंगे। ऑपोजिशन के काम है वो प्रश्न उठाए, जो भी क्रिटिसिज्म करना है करने, मगर ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड मेक देम स्ट्रांग एंड मेक देम फाइट अगेंस्ट मी। दैट्स नॉट माय बिजनेस, लेट देम डू इट। राहुल, मैम आपसे एक सवाल राहुल पूछना एक एक प्रश्न चाहूंगी विचारा। कि राहुल अभी, मैम एक सवाल पूछना चाहेंगे। एक एक प्रश्न विचारा। राहुल मैम आपने अभी बात की कि कैसे इन 9 वर्षों में मोदी सरकार जी ने काफी जनता के हित में फैसले लिए। ऐसे ही एक फैसला है अनक्लेम्ड एसेट्स के ऊपर, तो क्या एक सेंट्रलाइज्ड आप प्लेटफॉर्म बनाने का सोच रहे हैं अनक्लेम्ड एसेट्स, ताकि लोगों को वो मिलना आसान हो? और दूसरा मैम आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि PSU बैंक्स की 2 PSU बैंक्स की आपने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इस बजट में बात की थी, उस प्लान के बारे में अगर आप बता पाएं। अनक्लेम्ड एसेट्स के विषय बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर कोई बैंक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या शेयर खरीद कर रखे, उसमें नॉमिनी का नाम नहीं है, तो वो नॉमिनी कौन हो सकता है, उनके लीगल इनहेरिटर्स कौन है, इनको ढूंढ करके उनका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करके फिर विदाउट एनी फर्दर लिटिगेशन उसको पास करने का काम समय लगता है। इसीलिए उसको स्पीड अप करना, it's not me sitting and say okay give it to him because he is son of so and so. There can be several legal aspects which have to be completely satisfied, and then only the clearance of that money can happen. So it will take time. Let us not be under a illusion that now if सरकार सोचती है तो कल ही क्लियर कर सकते, कल क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, करंट अकाउंट हो, या शेयर रख रही हो, या आपके प्रॉपर्टी कोई लॉकर में हो, आपका नॉमिनी का नाम स्पष्ट डॉक्यूमेंट में लिखना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाता है। उसको क्लियर करने के लिए सालों तक चलता है, क्योंकि these are very important legal issues which will be brought in. So उसका एक मिनट मैं खत्म करूं, प्रश्नाचं उत्तर देऊ द्या। एक मिनट मैं उसका I am talking with all the concerned regulators and asking them to have special drive and campaign done so that these monies can reach the people who lawfully should get it. So that's the first thing. The second question that you asked about the bank privatizations, they will go on as per schedule, and there is no other change in it. राहुल नहीं, मैं कंप्लीटली आपका बातों को मानने को तैयार नहीं हूँ, मगर उसमें सच्चाई भी हो सकता है। मगर इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी 1 महीने में एक बार प्रगति कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जिला स्तर के अधिकारीगण को भी वाया VC बुला करके उस जिले में क्या कितना आगे बढ़ रही है हर एक स्कीम, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता, 116 जिला ऐसे चुनने गए जिसमें और काम करने का था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम दे करके उनका पिछड़ापन को कम करने के लिए और हर एक स्कीम में सैचुरेशन पोजीशन रीच करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम हुआ। उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आगे भी आए और in some of them very surprising developments happened for the good. अभी वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम और नीचे के ओर जाकर के एस्पिरेशनल ब्लॉक का प्रोग्राम हो रही है। मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सैचुरेशन अचीव करने के बाद अभी ब्लॉक स्तर पर अचीव करने के लिए प्रयत्न चल रही है। इसीलिए जहां कमी है वहां भरपाई करने के लिए और मेहनत हो रही है।
विनोद जी मेरा सवाल विनोद जी। पीएम स्वनिधि से लेके है। मैं ये जानना चाह रहा था, अभिषेक एक मिनट, एक मिनिट त्याच्यानंतर तुम्हीच विचारा अभिषेक। मेरा सवाल पीएम स्वनिधि को लेके है। देश में टोटल जितने लाभार्थी हैं उसके 25% उत्तर प्रदेश में है, 15% एमपी में है। महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे सिर्फ 9% है। आपको लगता है कि यहाँ पे डबल डिजिट का ग्रोथ होना चाहिए या इतना कम से कम रहना? नहीं, एक मिनट, ये इसमें डबल इंजन सरकार, एक इंजन सरकार के विषय नहीं है भैया। अगर लोकली राजनीतिक नेतागण एक स्तर पर आप भी जा करके स्वनिधि में मेरा बगल वाले को मिलना चाहिए, इनको दे दो करके आप अगर बैंक को अप्रोच करोगे उनको भी मिलेगा। इसमें एक्सक्लूशन का प्रिंसिपल नहीं है। जितने लोग एलिजिबल है उतना ले आओ, हम सबको देने के लिए तैयार है। अगर लोकल स्तर पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई भी जाए, बैंक देने का है, बैंक इनकार कर नहीं सकते। इसीलिए डबल इंजन सरकार के विषय अलग विषय है, उसके ऊपर मैं महाराष्ट्र के विषय में बात करूंगी। मगर ये स्वनिधि के विषय में जहां भी बैंक के पास कोई जाने में ही तुरंत उनको मिलेगा। आप अभी भी अगर कोई आपका जानकारी में है तो मुझे डेटा दे दीजिए, मैं जरूर देख लूंगी उसको। मैम अभिषेक बोल रहा हूँ। इसमें एक जानकारी, बहुत मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछा। पीएम स्वनिधि शुरू हुआ कोविड के समय। हमारे जो फेरी वाले हैं ये जो तकलीफ में आए थे इनको मदद करने के लिए, लेकिन तब की उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने ऑफिशियल डिसीजन लिया कि हम पीएम स्वनिधि नहीं करेंगे, और एक भी फेरी वाले को एक नया पैसा उद्धव जी की सरकार ने नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस निर्णय को बदला, पीएम स्वनिधि शुरू किया और सबसे पहला ड्राइव मुंबई में किया, और एक ही दिन मुंबई के 1 लाख फेरी वालों को प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से उनके अकाउंट में स्वनिधि दिया। और केवल इतना ही नहीं, ये 1 लाख लोगों को हमने डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ट्रेन किया, और आज वो लोग, उनमें से अधिकांश लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 9% आप कह रहे हो ये केवल पिछले 6 महीने का है, 2.5 साल सरकार ने कुछ किया नहीं है। मैम अभिषेक बोल रहा हूँ। एक सवाल ये है कि 9 साल पूरे हुए हैं, आपने उपलब्धियां बताई है, लेकिन अब चूंकि चुनावी साल शुरू हो रहा है और विपक्ष लगातार आप पर हमले करेगा, तो पिछले 9 साल के भीतर जो भी खामियां विपक्ष लगातार लेकर सड़कों पर उतरा, अब वो फिर से लोगों के बीच में जा रहा है और जाने की प्लानिंग कर रहा है। इसको कैसे काउंटर करेंगी? और अगले इन्फ्लुएशंस भी एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए होगी। चाहे कौन सी इन्फ्लुएशंस? मतलब हाँ, इसको कैसे? इन्फ्लेशन का डेटा शायद आपके पास नहीं हो, मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ। ऑलरेडी वो 4.8 तक पहुंच रही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स तो क्लोजर टू नेगेटिव टेरिटरी। मैं सिर्फ नंबर के आधार से नहीं बात कर रही हूँ, हम देश भर से लोकल मार्केट में क्या आज का भाव है, आलू का हो, प्याज का हो, दूध का हो, कुछ और का हो, सब डेटा कलेक्ट करते हैं। और जहां इंटरवेंशन का जरूरत है, जैसे कि जब गेहूं का प्राइस बढ़ा, गेहूं का मार्केट में प्राइस बढ़ने के समय तुरंत बफर स्टॉक से रिलीज करके, क्योंकि रिलीज हुआ जल्दी गेहूं का दाम कम भी हुआ। ऐसे करके इंटरवेंशन जहां करना है वो करते आ रहे हैं। इसीलिए हम निगरानी रखेंगे, आने वाले दिन में भी निगरानी रखेंगे। इन्फ्लेशन के ऊपर एकमात्र भी हमारी निगरानी कम नहीं हुआ। कांग्रेस ने लीगली अपने मैनिफेस्टो में, या फिर मध्य प्रदेश को लेकर के एक मैनिफेस्टो, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तमाम सारे, कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। इस तरीके के वादे चाहे वो राजस्थान में किए गए, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, इसको कैसे काउंटर करें? ठीक है, काउंटर करेंगे ना। सोनू, शेवटचा प्रश्न, शेवटचा प्रश्न मैम, शेवटचा प्रश्न। मैम हियर, सोनू हियर।
मैम शेवटचा प्रश्न आपने कहा कि 9 सालों में आपकी सरकार ने जो भी आपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे 2014 का हो या 2019 का पूरा किया गया, लेकिन इन वादों में जो कहा गया था 2019 में कि किसान का इनकम 2022 तक डबल हो जाएगा, वो होता हुआ दिखा नहीं। क्या वो पोस्ट अब 2024 में होगा या 2026 में? नहीं, एक मिनट। किसान का आय दुगुनी होना, इसका ओवरनाइट हम कर देंगे ऐसे नहीं किया। एक मिनट। और दुगुनी होने का रास्ता बहुत सारे अपनाया। मैं सिर्फ आपके लिए ये जानकारी देना चाह रही हूँ कि आज भारत देश में ये 6,000 रुपया सम्मान दे रहे हैं। फर्टिलाइजर प्राइस जब 3 गुना बढ़ा, उनको बढ़ने नहीं दिया, वो राहत भी दिए, वो सब। और सीड्स के बारे में स्लाइड में भी है, जो बीज उनको मिलना चाहिए सस्ते में, अच्छा क्वालिटी सीड्स, वो भी। ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम के रास्ते के द्वारा उनका खर्च कम करने के लिए बहुत मेहनत हो रही है। मगर ये भी देखने लायक है, इन द नेम ऑफ इनकम डबलिंग, आज भारत देश वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर है। एक्सपोर्ट भी करते हैं हम। दूध वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बनाना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वीट वर्ल्ड में 3rd और 4th पोजीशन है। राइस वर्ल्ड में 2nd और 3rd पोजीशन है। हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल्स इंडिया इज बिकमिंग द 2nd लार्जेस्ट। ये सब किसान के हित में ही और उनके मेहनत के वजह से ही इतना दूर चल रहा है। और जब एक्सपोर्ट होते हैं, उनको वही क्रॉप के लिए, वही फसल के लिए जो दाम भारत में मिलता है, उससे अधिक मात्रा में उनको इनकम मिलता है जब एक्सपोर्ट होते हैं। ये सब बिना सपोर्ट नहीं होता। और इनके वजह से, और महाराष्ट्र में फ्रूट्स का भंडार है। नासिक के क्षेत्र से कितने सारे फ्रूट्स आज एक्सपोर्ट में जा रही है। ये सब सरकार के मदद के बिना हो सकता है क्या? इसीलिए हम दुगनी बात करने के समय सिर्फ बैंक के अकाउंट में सरकार से कितना जा रहे इसका कैलकुलेशन नहीं, सरकार के सहूलियत और फैसिलिटेशन के वजह से कितना हो रहे इसका भी सोचना चाहिए। और फील्ड्स में सोलर पैनल रख के एनर्जी कंजम्पशन उनका जितना चाहिए उतना उठाने के बाद उसको ग्रिड में लिंक करके उससे भी कमाई उनको मिलता है। आज किसान का पंप का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम हो गया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे किसान को एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा आज वो बात भी, फिशरीज का बात भी मैं बोलना चाह रही हूँ। आज इफ द नंबर इज राइट, 56 lakh tons of fish were produced till 2014. 56 लाख टन 2014 तक, मतलब 63 years में हम 56 लाख टन फिश मैन्युफैक्चर मतलब पकड़ते थे। आज ये 9 साल में वो एडिशनली 101 लाख टन्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब 101 लाख टन आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो 63 इयर्स में 53 तक ही पहुंचा, 56 तक ही पहुंचा, अभी 101 तक पहुंच गए। ये सब मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है? क्योंकि सस्ते क्रेडिट मिल रही है फार्मर को, ब्याज इतना देने का आवश्यकता नहीं है। पहले जैसे सरकार उनको इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। और एनिमल हस्बेंड्री में हर ब्लॉक में वेटनरी डॉक्टर पहुंच करके उसका कॉस्ट भी हम खर्च कम कर रहे हैं। और एनिमल हस्बेंड्री अच्छा रह रही है, इसीलिए आज मिल्क प्रोडक्शन में इतना ऊंचा तक पहुंचे। ये सब भी किसान के हित में ही है ना। प्रश्न भरपूर आहेत, परंतु आपले कार्यक्रम वर्षभर आहेत, त्यामुळे पुढच्या वेळेला आपण पुढचे प्रश्न विचारूया। यानंतर आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी श्वेताजींना विनंती करतो की त्यांनी आभार व्यक्त करावे। पुढच्या प्रेसला अनेक प्रेस होणार आहेत, पुढच्या प्रेसला सगळ्यांना संधी मिळेल। श्वेताजी मुझे पता है काफ़ी प्रश्न बाकी हैं, लेकिन ये केवल मात्र पहला प्रेस है। हर लोकसभा में एक प्रेस होने वाला है। मुंबई में भी
हम अनेकों और प्रेस लेने वाले हैं। सर्वप्रथम मीडिया मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हर प्रश्न केवल मात्र 9 वर्ष के ऊपर ही आधारित था, इसलिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए, कैमरामैन, हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भाई बहन हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Special thanks to Nirmala Sitharaman ji. I think Mumbai is the financial capital of the country, and nobody better than the finance minister herself was better to give us the report card for what 9 years of Modi Sarkar means to the entire country. मैम, हम तहे दिल से आपके आभारी हैं, क्योंकि आप यहाँ आई, आपने वो प्रेजेंटेशन दिखाया। हम हर साल मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखते आए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड खास था क्योंकि 9 साल पूरे हमने कोविड के समय में हमने देखा है किस प्रकार घर घर तक सेवा पहुंचाई गई है। तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का ये साल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हमारे मित्रों ने कहा, आगे आने वाला इलेक्शंस दस्तक दे रहा है। लेकिन विद these numbers and your support and the leadership of Shri Narendra Modi and at the local level Shri Devendra Fadanvis ji and the entire team, I think we are all equipped. Thank you so much, ma'am. सर्वजण सभागृहातच थांबतील, मान्यवर गेल्यानंतर आपण उठायचं आहे। सर्व पत्रकार मित्रांसाठी दुसऱ्या मजल्यावर भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे, त्यामुळे आपण सर्वांनी भोजनाचा आस्वाद घ्यावा। खूप खूप